Hello everybody, I'm Gaganpreet Kaur. Welcome back to Moonwalker, and today we are taking a question from the topic Structural Functionalism by M.N. Srinivas. This topic comes in your Unit 1 of Paper 2, A1B में. And the most commonly asked question from this topic is elaborate on the structural functionalist approach of M.N. Srinivas in understanding Indian society. The question is very straightforward and it is asked as a 10 marker with 150 words of limit. So that means you will be given 2 pages to answer this question. So let's see what should be the structure of this question and how should you write this answer in a very structured way. This question was asked in the year 2022 1A 10 marker, and before that it was asked in 2017, and before that it was asked way before 2013 in 2010 and 2009. Okay, so this is a very favorite question. It comes every 2-3 years, so it is quite probable that next year also this question can come as a 10 marker. How should you approach this question? The structure of your answer is given in the question itself. The question says elaborate on M.N. Srinivas' structural functionalist approach. So you start by answer by telling what is structural functionalism. Okay. In 2 lines you will be defining structural functionalism, and you can make a diagram also, a very rough diagram showing Indian society and its various parts, various structures, and just label it. Preferably you should label it with pencil. You should draw the diagram with pencil, put it in a box, label it as figure 1 structural functionalism, and this is how you start your answer. So first you given the definition of the term given in the question, structural functionalism. Second, you tell structural functionalism approach used by M.N. Srinivas. So here you will give a little background where how M.N. Srinivas is using this approach in his own works. Third point you will elaborate a little on his works, in understanding which structures of Indian society he has used this approach, and then you substantiate that statement by giving an example. So यहाँ पे we will be talking in third point, which is the crux, which is the major part of your answer. Here you will be talking the works of M.N. Srinivas, where he has used this approach. ठीक है. Fourth में, now here your answer is majority of your answer is complete, but it is not yet complete. You would not get full marks unless you talk about the criticism of his structural functionalist approach. In criticism you talk about the cons. What has been the observation of other sociologists like A.R. Desai या किसी भी sociologist का अगर आपके पास criticism है with regard to this approach, you write, and since this is a 10 marker, write just 1 or 2 criticism. More than that you will be mismanaging your answer and your time limit. And in fifth, last point, you will be talking about the contributions and conclusion. Now here I would like to stress on the fact that contributions has, the part where you talk about the contribution has more weightage than conclusion. Conclusion is just to close your answer, but if you are short of time and you are short of word limit, that is you're short of space, you write contributions properly and you can leave out conclusion. Okay. Conclusion is not much expected in a 10 marker if you write contributions, but if you're writing a 20 marker, then you should also write a 2-liner conclusion as well. So this is the structure of your answer for a 10 marker. This is what is expected from you by the examiner. So let's see what should be the model, the ideal answer of this question.
First part में you define structural functionalism. Now structural functionalism, the definition is it is a perspective, it is a point of view to understand Indian society. So it regards society as a system of unity, the various parts of which are interlinked to each other. It says that society, especially Indian society, it is a system of unity. It is united by its microstructures, its substructures. What kind of substructures? Caste, kinship, religion, family. These are the microstructures which are interlinked to each other, and that is how they maintain the unity, the solidarity, the integration of Indian society. ठीक है, दिस इज अ बेसिक टू लाइनर डेफिनेशन. नाउ यू सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट. एवरी स्टेटमेंट यू राइट इन योर आंसर, इट शुड बी सब्सटैंशिएटेड बाय एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट में बताओगे कि एम.एन. श्रीनिवास ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच यूज करी टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. हिज परस्पेक्टिव वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल sociologists. Now M.N. Srinivas did his bachelor's under G.S. Ghurye. G.S. Ghurye was his teacher, he was a student from Bombay University. But he did not take his ideological perspective. He took his perspective of structural functionalism from his teachers in Oxford University. He went to Oxford University to do his PhD under two teachers, A.R. Radcliffe Brown and E. Evans Pritchard. So these were the two sociologists, in fact not sociologists, anthropologists. At that time the discipline of sociology was still emerging. So these were the two anthropologists who used to follow the perspective of structural functionalism, and they inspired M.N. Srinivas to follow this approach in studying Indian society. ठीक है, why, how, उसको थोड़ा सा elaborate करो. कि they said कि to understand any society you have to go to its microstructures, to the simplest of the parts of the society, and that is how you can make generalizations in understanding the macroscopic Indian society. तो छोटे छोटे parts Indian society के क्या हैं? Family, kinship, religion, law. ये पार्ट्स को अगर आप समझ जाते हो, ये सब स्ट्रक्चर्स को अगर आप समझ जाते हो, देन यू जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टडीज एंड यू टेल दैट यू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू दी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, थर्ड पार्ट में वी विल टेल द वर्क्स वेयर ही हैज़ यूज्ड दिस अप्रोच. तो M.N. Srinivas has used this approach in studying various microstructures like caste, village, family. These are the major 4 studies. And then you substantiate this statement by giving an example that, for example, in caste, he did a field study among Cougs of Mysore. Cougs of Mysore की स्टडी आप ज़रूर डालेंगे, कोई भी आंसर आपका होगा when it comes to M.N. Srinivas, कि वहाँ पे इन्होंने कास्ट को स्टडी किया, that various castes are present in the society of Cougs, and these castes have a role to play, have a function to play, which contribute to the unity and integrity of the society. How? The castes he talk about in the society of Cougs are Brahmins, who play the function of priests. Kaniyas are astrologers. Bannas जो थे, they used to perform the worships, the rites told by priests and astrologers. फिर Medas and Polyas जो थे, they were lower caste, but they also had a united role to play, a functional role to play. जो Medas थे, they used to केन के वो सामान बनाते थे, आर्टिफैक्ट्स बनाते थे. केन की कुर्सी, केन का टोकरी या मछली पकड़ने का जाल हो गया, ये सब काम था मेदास का. एंड जो पोलियास थे, दे यूज टू एक्ट एज हाउस होल्ड सर्वेंट्स ऑफ अपर कास्ट्स. तो ऑल दीज डिफरेंट कास्ट्स, they have a functional role to play in the unity of the society, Coorg society. तो ये केस स्टडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हिज यूज ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो डायरेक्टली सवाल पूछा गया है वो आपका कंप्लीट होता है, बट दिस इज नॉट हाउ यू फिनिश योर आंसर. योर आंसर
gets maximum points when you talk about the criticism of this approach as well. तो criticism में आप एक, क्योंकि it's a 10 मार्कर, तो एक criticism आप बता दीजिए कि A.R. देसाई जो कि एक मार्क्सिस्ट हैं, वो कहते हैं कि M.N. Srinivas has over emphasized on the unity and integrity role of the microstructures, but they do not talk about the social inequality, the conflict, the oppression produced by these microstructures. Caste discrimination is there, caste oppression is there, oppression of Dalits is there, पॉवर्टी है, या रिलीजन का क्या रोल है, रिलीजन के अंदर ही पेट्रियार्की बसी हुई है, रिलीजन के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है ऑफ लोअर कास्ट्स. ठीक है, तो जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो M.N. श्रीनिवास ने इग्नोर कर दी है, एंड ही ओवर एम्फसाइजेस ऑन द सॉलिडारिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो ये आप मेंशन कर देंगे कि हिज point of view is conservative and status quoist. His point of view is Brahminical point of view. It's an elitist point of view. ठीक है, एक क्रिटिसिज्म आपने 10 मार्क में मेंशन कर दिया, एंड नाउ यू कंक्लूड योर आंसर बाय टेलिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म M.N. Srinivas has played a great role in contributing to the progress of Indian sociology. उन्होंने बुक व्यू से हटके, G.S. घुरे के बुक व्यू था कि हम इंडियन सोसाइटी को समझेंगे एंशिएंट टेक्स्ट से, महाभारत, रामायण, वैदिक टेक्स्ट्स, उनसे समझेंगे, तब जाके आपको इंडियन सोसाइटी का समझ में आएगी. उन्होंने कहा कि बुक व्यू नहीं, आई विल फॉलो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच, एंड इसलिए इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दिया, इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया इंडियन सोसाइटी को समझने का. ठीक है, एंड इनकी जो अप्रोच है दैट हैज़ बिन कैरीड फॉरवर्ड, द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच हैज़ बिन कैरीड फॉरवर्ड बाय द अपकमिंग सोशियोलॉजिस्ट्स इन डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर्स. कैसे? पॉलिटिक्स को समझने में ये अप्रोच यूज़ करी रजनी कोठारी ने, सोशल मूवमेंट्स को समझने के लिए ये अप्रोच यूज़ करी M.S.A. राव ने, फैमिली को समझने के लिए I.P. देसाई ने ये अप्रोच यूज़ करी, एंड मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए Y.B. दामले ने ये अप्रोच यूज़ करी. तो ये यहाँ पे आपने कंक्लूजन में, कंट्रीब्यूशन में 4 थिंकर्स का एडिशनल नाम बता दिया, एंड इट एनरिचेस योर आंसर. जितने आप थिंकर्स के नाम अपने आंसर में डालोगे उतने आपके कंप्लीट होता है आंसर, उतने आपके नुआंसेस, शेड्स बनते हैं आपके आंसर के, उतने डायमेंशंस बनती हैं आपके आंसर की. तो जितने थिंकर्स लिखो उतना अच्छा है. एंड यहाँ पे आपको दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन पार्ट, बट सिंस इट्स अ 10 मार्कर और कंट्रीब्यूशन ये आपका इतना हैवी हो गया है, तो यू डू नॉट हैव टू कंक्लूड योर आंसर. नॉर्मली कंक्लूजन में आप लिखते हो कि हाँ जी, दैट इज़ वाई ही हैज़, यू नो, दैट इज़ वाई द कंक्लूजन यू राइट इज़ कि येस, he has contributed to the study of Indian sociology, he has given an indigenous point of view, and he has given a proper direction. तो these are flowery words, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इतने वेटेज नहीं है अगर आपका contribution बहुत strong है. तो यहाँ पे आपके 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं ABCDE, एंड ये स्ट्रक्चर से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है. टोटल 196 वर्ड्स में ये पूरा आंसर गया है, बट दिस इज़ वेरी ईजी टू फिल 2 पेजेस ऑफ योर आंसर इन अ वेरी एनरिचिंग वे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होता है M.N. श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. नेक्स्ट हम क्वेश्चन उठाएंगे A.R. देसाई, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ A.R. देसाई, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उसका स्ट्रक्चर और लेआउट कैसा होना चाहिए. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.